हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची तो ये वीडियो सेशन में आलोचना करबा अपकमिंग ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर मेन परीक्षा पई महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन ये वीडियो में आलोचना करबा समस्त क्वेश्चन सीबीटी परीक्षा मु कलेक्ट करिछि आपनकर टीसीएस जो परीक्षा गुडी कंडक्ट करथिला सेतुर आपनकर ए कंप्यूटर क्वेश्चन गुडी कलेक्ट करा जायछि तो आपण डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा रे निहाती देखिबा को पाइबे तो क्वेश्चन को भला भाबरे रिवाइज करनेबे ए सहित जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करदबा सहित सांगमानक मध्य निहाती वीडियोटी शेयर करदेबे आ पीडीएफ एक्सेस जदि चाहउछंती तो टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन करि परिबे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिया जायछि तो चलंतु बिना लेट रे डिस्कशन डायरेक्ट स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 1 देखो हाउ डू यू एक्सेस द सेव एज फंक्शन इन एमएस वर्ड 365 तो एमएस वर्ड 365 रे हमर जो सेव एज फंक्शन हमें एक्सेस केमति कर परिबा बाय गोइंग टू द फाइल टैब एंड सिलेक्टिंग द सेव एज तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर या सहित आ गोटे जिनस आपण मन रखिबे एमएस वर्ड जेहेतु आपनकर एठी कहले ना तो एमएस वर्ड जो हमर फाइल स्टार्ट हुए ना सेटा स्टार्ट होता winword.exe तो winword.exe द्वारा हमर एमएस वर्ड टा स्टार्ट होता है या सहित आपण गोटे जिनस मन रखिए एमएस वर्ड टा गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एटा मध्ये परीक्षा आछी या सहित आ गोटे क्वेश्चन आपण मन रखिबे हमर जो वार्ड डॉक्यूमेंट गुडी मोस्टली रही है ना वार्ड डॉक्यूमेंट गुडी सेटा को फॉर्मेट रही है तो ये आप मन रखिए आमर जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन थाए ना वार्ड डॉक्यूमेंट पई तो सेटा होची हमर डॉट docx एटा मध्ये मन रख ए क्वेश्चन मध्ये परीक्षा आछी या सहित आपणकर जदि गोटे क्वेश्चन आपण पचार देला जे हमर एमएस वर्ड रो मोस्टली कोन ना पार्ट गुडी पचारे तो एमएस वर्ड टी भला भाबरे रिवाइज करनेबे आ या सहित एमएस वर्ड रो जो ओल्ड गुडी रही माने वर्ड 2007 से गुडी भला प्रैक्टिस करनेबे या सहित पीडीएफ तो ऑलरेडी आपनकर शेयर कर दोछि या सहित हम जेहेतु सीरीज भाबरे कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कशन करबा तो प्ले लिस्ट रो आपण भला भाबरे से गुडी प्रैक्टिस करनेबे आ या सहित पीडीएफ हम टेलीग्राम रो डाउनलोड करी भला भाबरे रिवाइज करनेबे कारण कंप्यूटर क्वेश्चन आपनकर परीक्षा रे महत्वपूर्ण रोल प्ले करिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 तो देखो सठिक उत्तर हम इट सेंटर्स द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली बिटवीन द मार्जिन्स ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचरला इन एमएस वर्ड 365 हाउ कैन यू एक्सेस द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन 3 गो टू द रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर तो ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला which of the following device is most commonly used to connect multiple computers within a local area network LAN and also efficiently manage data traffic by only sending data to the device it is intended for तो एटा होची स्विच हो सठी ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला व्हाट आइकन इज यूज्ड फॉर अटैचिंग ए फाइल और डॉक्यूमेंट टू एन ईमेल एड्रेस तो देखो गोटे ईमेल मैसेज रे हमर जो माने अटैच करिया कहले फाइल और डॉक्यूमेंट को ईमेल मैसेज रे तो सेतले हमर कोन रही थाए आइकनटा पेपर क्लिप आइकन गोटे थाए तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर एटा मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट परीक्षा निहाती एबडी क्वेश्चन देखिबा पाइबे नेक्स्ट देखिबा हां देखो व्हिच आइकन इज कॉमनली यूज्ड टू अंडो द लास्ट एक्शन परफॉर्मड इन एमएस वर्ड 365 तो सठिक उत्तर हबो कोन सठिक उत्तर हबो ऑप्शन 2 ए कर्व्ड आरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट तो ऑप्शन 2 होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला इन एमएस एक्सेल 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रो इन एमएस एक्सेल 365 देखंतु सठिक उत्तर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस तो आपनकर आइकन तो एटा आपण मन रखिबे प्लस कीटा मोस्टली आपन इंपोर्टेंट तो आपनकर ऑप्शन 4 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला इन एमएस एक्सेल 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ट इन एमएस एक्सेल तो एटा होची स्पेस चार्ट हम सठिक उत्तर गोटे नॉट माने जोटा नुहे कि गोटे टाइप ऑफ चार्ट नुहे एमएस एक्सेल रे सेटा होची स्पेस चार्टा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला हाउ डू वी मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट तो सठिक उत्तर होची बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला व्हाट आर द आइकन बिलो द मेनू बार इन ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लिकेशन कॉल्ड तो सेटा को हमर कह जे टूल बार आइकन कह जे ऑप्शन 1 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंडेशन ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब एनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ वेब पेज कंटेंट देखो यार सठिक उत्तर होची हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन 1 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचरला द सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट्स ऑफ एन ईमेल इज तो @ हो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो
पचारला इन MS Excel 365 which option allows you sort data based on multiple columns simultaneously तो सेटा होची custom sort तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला which of the following refers to the intersection of a column and row in a worksheet of the MS Excel तो सेटा होची सेल हो सटिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला which of the following is not an email service provider देख याहू मेलटा तो गोटे इमेल सर्विस प्रोवाइडर हटमेलटा मध्य इमेल सर्विस प्रोवाइडर जीमेलटा मध्य इमेल सर्विस प्रोवाइडर किंतु कूल मेल किसी नहीं तो ऑप्शन 3 हो आपन करेक्ट आंसर जोटा कि गोटे इमेल सर्विस प्रोवाइडर नुहे ये पचार था नॉट एन इमेल सर्विस प्रोवाइडर ना तो कूल मेल हम सठिक उत्तर। इन MS Word 2010 to use the spelling and grammar option one has to click on the dash tab and within the dash group click on the spelling and grammar तो देखो प्रथमे क्लिक ऑन द रिव्यू टैब देन प्रूफिंग ग्रुप क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP IP विथ रेफरेंस टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल तो TCP टा होची आपनकर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आउ IP तो ऑलरेडी कहि दिछि ना इंटरनेट प्रोटोकॉल तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा हां पचारला व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट Shift plus F3 इन MS Word 2010 तो MS Word 2010 Shift plus F3 रो काम होची दी शॉर्टकट स्विचेस द टेक्स्ट बिटवीन अपर केस लोअर केस एंड टाइटल केस तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द MS Word सॉफ्टवेयर तो MS Word सॉफ्टवेयर टा गोटे वर्ड प्रोसेसर तो इट इज ए वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन तो कौन IP एड्रेस सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टा जोटा। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS Word तो सठिक उत्तर होची टॉप वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट टा नुहे तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू स्ट्राइक थ्रू द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इन MS Excel 2010 तो सठिक उत्तर Ctrl+5 तो आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा इन MS Excel ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट डैश वर्कशीट तो वन वर्कशीट हो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर वन वर्कशीट। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन ओनली करंट सिस्टम डेट इन MS Excel 2010 तो टुडे आपनकर क्लोज ब्रैकेट जोटा रही ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS Word 2010 तो सठिक उत्तर Ctrl+Alt+V ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर तो Ctrl+Alt+V रो काम होची जाकी ओपन करिवो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS Word 2010। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेन इन MS Word डॉक्यूमेंट तो Ctrl+V हो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर Ctrl+V पेस्ट करिया पे ना तो आपनकर पेस्ट पे। नेक्स्ट देखा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट देखो यार सठिक उत्तर होची FTP तो FTP हो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा हां देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट इन MS Word तो सेटा होची सुपरस्क्रिप्ट हो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखा बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर प्रोवाइडेड इन MS Excel 2010 वर्कबुक तो यार सठिक उत्तर होची 3 ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर तो 3 सीट्स आर प्रोवाइडेड इन MS Excel 2010 वर्कबुक डिफॉल्ट रे। नेक्स्ट देखा द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट्स इन MS Word 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस तो एटा 0.5 आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर 0.5। नेक्स्ट देखा पचारला एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव तो IP एड्रेस सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टा। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन ए टेबल इन MS Word 2007 तो AGN आक्रोश तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर इन MS Excel वर्कबुक 2007 तो तीनटा डिफॉल्ट थाए ना ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर तीनटा रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन इन MS Excel 2007 तो सठिक उत्तर आपनकर नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन देछि ना MS Excel 2007 रे सेटा होची कम n तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारला
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି। ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଆଲାଉ କେତେବେଳେ ହୁଏନି। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, MS ଏକ୍ସେଲରେ ୱାର୍କବୁକ୍ରେ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାର୍କସିଟ୍। ତ ଗୋଟେ ୱାର୍କସିଟ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3ଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ MS ଏକ୍ସେଲ୍ 2010 ରିନେମିଂ ଦ ଟେବୁଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି Ctrl+R। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ HTTPS ମିନ୍। HTTPSର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସିକ୍ୟୁର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following best describes the MS Word software। ତ MS Word ସଫ୍ଟୱେୟାରଟାର ଯେଉଁଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ MS Excel 2010 ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍। ତ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମର MS Excel 2010ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି Alt+N। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word। ତ valid paragraph alignment MS Word সেটা হচ্ছে আমার কোন টপটা। তো not a valid paragraph alignment MS Word রে এটা হচ্ছে টপটা। নেক্সট দেখো, not বুঝলেন ନାହିଁ। তো নেক্সট দেখো, dash tab in MS Excel 2010 ribbon bar provides tools to manage the worksheet appearance both on screen and printed. These tools control theme setting, grid lines, page margin, object aligning and print area। তো সেটা হচ্ছে পেজ লেআউট। অপশন 1 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো, পচারিলা MS Excel 2010 the remove duplicates function is found in the ribbon under the dash tab। তো দেখন্তু এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ডাটা ট্যাব। অপশন 1 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো, পচারিলা the keyboard shortcut key to open the format cells dialog box in MS Excel 2010 is। তো সেটা হচ্ছে Ctrl+Shift+F। অপশন 2 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো, পচারিলা the full form of URL হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর। অপশন 3 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো, which of the following is the function of IP address। তো IP address ର function ହେଉଛି internet protocol address ଫଙ୍କସନଟା ହେଉଛି identifying the device on a network। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which of the following cannot be default font size in the font menu drop down list in MS Word 365 in Windows 10। ତ ଦେଖ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 13। ଅପସନ୍ 4ଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା in MS Excel 365 which of the following shortcut key in MS Excel to print a spreadsheet। Ctrl+P এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, what will be the address of the cell which lies at the intersection of the 7th row and the 10th column in MS Excel 2010 worksheet। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ J7। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following keyboard shortcut key in MS Word 2010 is used to move the previous cell in a row on the table। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି Shift+Tab। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, dash consists of a matrix of rectangular cells grouped in a row and columns। ତ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, in MS Excel 365 in which of the following ribbon tabs does the add rows option reside in MS Excel 365। तो होम रो इनसर्ट। ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा, पचला द ग्रुप ऑफ बटन्स और आइकन्स बिलो द मेनू बार इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड। ताको हमर टूल बार्स को जाए। ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर, टूल बार को जाए। नेक्स्ट देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रही ना सेटा होची कोड पार्ट पे मोस्टली देछि ना, तो सेटा होची हेडर आ बॉडी पे। तो आपनकर ऑप्शन 1 हिजो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, in MS Excel 365 when you right click on the cell and select filter which of the following option is not visible। तो हमर जो ऑप्शनटा विजिबल होबो ना सेटा होची filter by selected cell height। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला which Microsoft Excel 365 function calculates the average of the range of the numbers। तो सঠিक उत्तर होची एवरेज। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पचाला which option allows you to select multiple documents while opening them in Microsoft Word 365। तो सঠিक उत्तर होची होल्ड डाउन द शिफ्ट की while clicking on the document। ऑप्शन 3 होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड। तो तक हमर इंटरनेट को जाए। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर, इंटरनेट। नेक्स्ट देखो,
In MS Excel 365, which of the following shortcut key is used to save a workbook in MS Excel? तो कंट्रोल प्लस एस हो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर शॉर्टकट की गुड भल भाव प्रैक्टिस करनी कारण से क्वेश्चन कंप्यूटर आसीबो which of the following is the correct shortcut key used to the increase paragraph indentation in MS Word 365 देखो कंट्रोल प्लस एम हो सठिक उत्तर कंट्रोल प्लस एम हो करेक्ट शॉर्टकट की used to increase paragraph indentation in MS Word to the 365 ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो which of the following option will allow you to set text within a paragraph and different margin in MS Word 365 तो এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টিং তো অপশন 2 হচ্ছে करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचला which of the following is used to move text from one location to another in a word document in MS Word 365 तो সঠিক উত্তর হচ্ছে cut and paste text at desired location অপশন 1 হচ্ছে करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Dash involves using a smartphone's data connection to provide internet access to other devices such as laptops or tablets. देखो सঠিক उत्तर होची टीथरिंग ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर टीथरिंग को जाए In Microsoft Word 365 which option is used to save an existing document within a new name or in a different location तो save as हो सঠিक उत्तर ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर save as होइते नेक्स्ट देखो In MS Word 365 to change the formatting of the text to match the formatting of the other text in a document which of the following tools can be used সঠিক উত্তরটা হচ্ছে ফরম্যাট পেন্টার হবে সঠিক উত্তর অপশন 2 হচ্ছে करेक्ट आंसर ফরম্যাট পেন্টার নেক্সট দেখো what does the paste command do in Microsoft Word 365 সঠিক উত্তরটা হচ্ছে insert the content from the clipboard into the document অপশন 2 হচ্ছে करेक्ट आंसर নেক্সট কোশ্চেন দেখো which of the following shortcut keys is used to modify selected text as italic in MS Word 365 तो सঠিक उत्तर कंट्रोल प्लस आई तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचला which of the following is an address of the on the world wide web www that is used to access specific web resources and is a specific path to the resource तो सঠিक उत्तर होची URL যেটা কি ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর কয় যায় অপশন 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो the keyboard shortcut for opening a new document in a Microsoft Word 365 while another document is already open is तो सेटा होची कंट्रोल प्लस एन ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर शॉर्टकट होची कंट्रोल प्लस एन नेक्स्ट देखो which of the following tabs is in MS Word 365 allows you to customize the page size in page setup dialog box तो सेटा होची लेआउट टा ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर लेआउट नेक्स्ट देखो in MS Excel 365 which function from the following list is used to tally the quantity of the empty cells within the specified cell range तो सेटा होची काउंट ब्लैंक आउ ओपन क्लोज ब्रैकेट तो आपनकर नेक्स्ट देखो which of the following statements about auto fitting the row height in MS Excel 365 is correct सटीक उत्तर ऑप्शन 2 double clicking on the boundary between row headers will automatically adjust the row height to the fit content next देखो पचला which of the following document setting can be changed from the layout tab of MS Word 365 margin so सटीक उत्तर margin document setting can be changed from layout tab of the MS Word 365 next देखो while composing an email what does the user to have write in the subject field तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन 3 the main topic of an email message option 3 होची correct answer which text alignment option in Microsoft Word 365 aligns text along the left margin तो सटीक उत्तर होची left align option 2 होची correct answer next देखो पता in Microsoft Excel 365 which tool should we use for creating or editing formulas in a worksheet तो सटीक उत्तर होची formula bar option 1 होची correct answer next देखो what does the following icon resembles in MS Word 365 तो जो हमर एटा देछि ना ये आइकन टा रिजेबल करे MS Word 365 रे एटा होची राइट अलाइनमेंट ओके नेक्स्ट देखो पचला in which of the following tabs in MS Word 365 the is bullets and numbering present तो होम हो सटीक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर भलो भलो क्वेश्चन होइछि तो एगुडी रिवाइज करनियो नेक्स्ट देखो which of the following shortcut key is used to insert a hyperlink in MS Word 365 control plus K option 2 is correct answer hyperlink by control plus K next देखो
Which of the following tabs on the ribbon in MS Word 365 provides options for the formatting text such as font style and size? तो सঠিक उत्तर होम ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. Which of the following is the correct way to sort a range of cells in ascending order in the MS Excel 365? सঠিक उत्तर ऑप्शन 4. In the sort dialog box, select the ascending option in the order section. Option 4 is correct answer. Which of the following is a private network that is typically open to external parties such as business partners, suppliers, and key customers? तो सঠিक उत्तर extranet. Option 2 is correct answer. Next देखा. पचला. In Microsoft Excel 365, which option should be selected if you want to save a workbook as a micro-enabled workbook within a different file name and location? तो सঠিक उत्तर save as. Option 1 is correct answer. Save as. Next देखा. In MS Word 365, what is the primary purpose of using bullets and numbering in the document formatting? सঠিक उत्तर to organize information into list and or sequences. Option 2 is correct answer. To organize information into list or sequences. Next देखो. Which of the following is an example of a table style in Microsoft Word 365? तो सঠিक उत्तर plain grid. Option 2 is correct answer. देखो 80+ क्वेश्चन आपनकर इथे डिस्कशन करछि. समस्त क्वेश्चन सीबीटी क्वेश्चन कलेक्ट कराइतला. तो आपनकर जो टीसीएस परीक्षा कंडक्ट करथिला ने प्रीवियसली, तो से परीक्षा रो ए क्वेश्चन गुडी को मु पिक करथिली. तो ए क्वेश्चन गुडी का आपनकर अपकमिंग परीक्षा रे निहाती हेल्पफुल रहबो. तो आपनकर खास करके जो अपकमिंग आपनकर OSSSC आरआई एआरआई एसएफएस जो मेन परीक्षा रही ना से आपन कंप्यूटर क्वेश्चन निहाती आपन किसी क्वेश्चन देखा पाइबे. भल भाव क्वेश्चन गोटे रिवाइज करनियो. आ पीडीएफ में ऑलरेडी आपको कहि सारी पीडीएफ आपन हम टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन कर दियो. टेलीग्राम ग्रुप रे आपन पीडीएफ डाउनलोड कर भल भाव प्रैक्टिस कर. आ कंप्यूटर सब सेक्शन वाइज आपन जो प्लेलिस्ट क्रिएट करिवे ना से प्रथम आपन पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी. तापर या सहित वीडियो मध्ये आलोचना करिबा. तो निहाती रिवाइज आ मॉक टेस्ट गुडी भल भाव प्रैक्टिस करनियो. अपकमिंग जो माने देख जो कटअप विषय समस्त कमेंट रे मेंशन कर सर कटअप केते कोन जीवो. कटअप जहाँ भी आसीबो आपण एबेठु प्रैक्टिस करंतु. कंप्यूटर क्वेश्चन तो सबुथरे आछि. तो भल भाव कंप्यूटर क्वेश्चन गुडी रिवाइज कर परिबो. जीके क्वेश्चन गुडी प्रैक्टिस कर परिबो. या सहित आपण अन्य जो सेक्शन गुडी रहिछि से अनुसार आपण एबेठु रिवाइज स्टार्ट कर दियंतु. आपणकर जहाँ भी आपण प्रिपरेशन करिवे ना कॉम्पिटिटिव लाइन रे सब क्वेश्चन लाभदायक हबो. कारण जदि आपणकर देखंतु जो माने भाबुजो जे आरआई परीक्षा आपणकर भल हुइनी तो अपकमिंग रे आपणकर अलगा परीक्षा रहिछि सेतरे मध्ये कंप्यूटर क्वेश्चन आछि. तो रिवीजन सब बेले निहाती हेल्पफुल हबो. अपकमिंग परीक्षा रे मध्ये ए क्वेश्चन गुडी हेल्पफुल रहबो. तो भल भाव प्रैक्टिस जारी रख. आ सेशन जदि भल लागिथो निहाती लाइक कर दबो, कमेंट करिवो, सांग मानक मध्ये निहाती वीडियो टी शेयर कर दबो. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग. जय जगन्नाथ.